Good afternoon, dear students and concerned teachers. This is Jagadish Suna from Government High School, Sikhipani. We have already learned or discussed your topic, the second part of your topic, the swimmer who does not need her legs. So today we are going to discuss another part of your topic. That means second part, paragraph number 7, 8 and 9. So let us go to the smart board. As we know, this is the picture of CN Janki. आमे जानू जे ए पिक्चर होची CN Janki करो. And you also know that she was the first handicapped person. She was the first handicapped person who swam the English Channel. She is also a Indian girl. Before we are going to discuss, आमे आलोचना करिबा पूर्वरु पिला माने आमे 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर पैराग्राफ आलोचना करिबा पूर्वरु बिफोर दैट वी recapitulate the previous learned topic, that means the part of second अर्थात the first part अर्थात प्रथम पार्ट रे आमे जहा पढी थिले ताकु टिके आमे recapitulate करिबा. तो आमे जहा सब पढिते ताकु तार पुनरावृत्ति करिबा. तो कौन सब पढ़ी पिला माने देखो CN Janki was the first handicapped swimmer. As you know in the previous class, CN Janki was the first handicapped swimmer. और the CN Janki थिले प्रथम विकलांग पहरली बा संतरणकारी. एटा में आलोचना करथिले. She got an idea to swim the English Channel. एवं तांकर पिला बेलरू इंग्लिश चैनल रे पहरिबा पई तांकर मनरे गुटे धारणा आसीतला. Then she conveyed to English Channel Swimming Association एवं एथिपई से English Channel Swimming Association को जणे थिले प्रकाश करथिले तांकर इच्छाटा. English Channel Swimming Association kept two conditions, and in order to get permission to swim in English Channel, the English Channel Swimming Association kept two conditions. अर्थात जनकु पहरिबा पई इंग्लिश चैनल रे अनुमति देवा पूर्वरु सेमानकर दुईटी कंडीशन थिला. ए विषय रे भी हमें आलोचना करथिले. एंड द फर्स्ट कंडीशन 10 आवर्स कंटीन्यूअस स्विमिंग इन वाटर. जल रे 10 घंटा धरी जने पहरिबार सामर्थ्य थिबो बा पहरि पारुथिबो. एंड सेकंड कंडीशन मैराथन स्विमिंग फॉर ए लॉन्ग आवर्स इन द हाई सी. अर्थात समुद्र रे माराथन दीर्घ संतरण दीर्घ समय धरी संतरण करि पारुथबो समुद्र जल रे. एइटा थिला तांकर द्वितीय कंडीशन. द सेकंड कंडीशन, देन इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस टू कंडीशन CN Janki began training in Bangalore under NIS coach Mr. Gopal. You have also learned, we have also discussed about Mr. Gopal, and under the coaching of Mr. Gopal in Bangalore, she began training. That means CN Janki began training. Mr. Gopal को अधीन रे बेंगलोर रे CN Janki आरंभ कर दिले इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन रो शर्त पूर्ण करिबा पई. Then Janki went Malpe and began training in the Arabian Sea under a coach named Mr. Dinesh Subarna. And in order to fulfill the number 2 condition, द्वितीय कंडीशन पूर्ण करबा पई she went Malpe, अर्थात से मालपे शहर को गले, समुद्र उपकूलवर्ती शहर मालपे को गले, and began training in the Arabian Sea. एवं से अरब सागर रे प्रशिक्षण नेबा आरंभ करथिले. एवं at that time her coach was Mr. Dinesh Subarna. That means under the coaching of Dinesh Subarna, she began her training. एवं Dinesh Subarna को अधीन रे से तांकर ट्रेनिंग आरंभ कर देले मालपे शहर रे. She started collecting funds for the trip to England, and then इंग्लैंड को जीवा पई अर्थ संग्रह करबा आरंभ कले. एटा भी हमें आलोचना करथिले. Janki left with her parents for England in the middle of 1992 and reached at Dover and began practicing in the English Channel. एवं 1992 मसिया मझिरे in the middle
रे से इंग्लैंड यात्रा कले एवं डोभर ब्रिज रे पहुंचले और इंग्लिश चैनल रे तांकर प्रशिक्षण आरंभ करदिले प्रैक्टिस करबा अभ्यास करबा आरंभ करदिले देन द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ऑफिशियल वर क्वाइट शॉक्ड एंड इन देयर एक्सपीरियंस द Channel Swimming Association, English Channel Swimming Association, official of the Channel Swimming Association were shocked to see जानकी swimming. अर्थात जानकी रो संतरण देखी डोभर रे जानकी रो अभ्यास बा तार संतरण देखी तांकर संतरण देखी इंग्लिश चैनल रो जेति के कर्मकर्ता थिले समस्ते आश्चर्य हेगिले. They were quite shocked. से माने संपूर्ण रूपे चकित होइगले एवं तांकर अनुभूति रे से माने प्रथम थर पय देखिथिले जे जणा विकलांग महिला इंग्लिश चैनल रे पहरी पारुछि. Then we can express or present the theme or the recapitulation through flow chart also. तो flow chart देखो बिला माने flow chart रे भी हमें प्रकाश करि परिबा हमरो जो पार्ट 1 रे जोटा हमें आलोचना करथिले पार्ट 1 रे कोन कोन आलोचना करथिले सेटा मु पूर्वरु कहली एबे फ्लोट चार्ट माध्यम रे आमे देखि परिबा 1997 जानकी वाज स्ट्रक बाय पोलियो गॉट द आइडिया टू स्विम द इंग्लिश चैनल देन कन्वेड टू द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन एंड दे केप्ट टू कंडीशन बिफोर अलाउड टू स्विम. कंडीशन नंबर 1 10 hours continuous swimming and condition number 2 marathon swimming for a long hours. Then she began training in Bangalore under the NIS coach Mr. Gopal. Then Janki got the help of Thimaya National Academy of Adventure. Then she started collecting funds for the trip to England. Janki left with her parents for England in the middle of 1992. एटा में गला क्लास रे हमें आलोचना सबु करथिले. So dear students, let us discuss the paragraph number 7 in detail. So I am going to read the paragraph and you listen and follow it. मु एटा पढिबा को जाउसी तमे सुनो टिके भलो करी. They were very worried, said Janki, and they kept a sharp eye on me during my training runs. I trained for about 3 weeks under the famous channel coach Stella Streeter. But when I told them that I wanted to make a solo attempt, they said they did not have a special boat to accompany me. This was in case I needed to be lifted out of the water. So it was decided that I would be part of a relay team. So they were very worried. Here they means the officials of English Channel Swimming Association. They were very worried. इंग्लिश चैनल एसोसिएशन रो कर्मकर्ता माने सदस्य माने से माने बहुत चिंतित थिले व्यथित थिले वरिड से माने चिंतित थिले. सेड जानकी कहिले जे से माने बहुत चिंतित थिले. एंड दे केप्ट ए शार्प आई on me during my training runs. That means when CN Janki started her training runs, the official of English Channel Swimming Association kept a sharp eye. Kept a sharp eye means ओडिया में कौन कहबे ताको तीक्ष्ण दृष्टि तीक्ष्ण नजर अर्थात जानकी कहंती परे जे स्विमिंग इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन रो कर्मकर्ता माने व्यथित चिंतित थिले जानकी को नहीं और जानकी जेते बेले तांकर ट्रेनिंग आरंभ करि देले से माने जानकी ऊपर गोटे तीक्ष्ण नजर रखिले. Why? Because they know Janki was a handicapped person. So they kept a sharp eye on her during her training runs. सेथिबे से माने जानकी को संतरण रे तांकर प्रशिक्षण रे गोटे तीक्ष्ण नजर रखिले. I trained for about 3 weeks under the famous channel coach Stella Streeter and the famous channel coach Stella Streeter. CN Janki
train for about 3 weeks ଏବଂ ଷ୍ଟେଲା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚ୍ୟାନେଲ କୋଚ୍ ଥିଲେ ଷ୍ଟେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟର ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା କଣ ଷ୍ଟେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟର ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସିଏନ୍ ଜାନକୀ train for about 3 weeks under famous channel coach ଷ୍ଟେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟର ଅର୍ଥାৎ ଷ୍ଟେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସିଏନ୍ ଜାନକୀ 3 ସପ୍ତାହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ 3 ସପ୍ତାହ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ एग्जाम रे आसी पारे भी केते सप्ताह धरि से स्टेला ଷ୍ଟ୍ରିଟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ टी train for about 3 weeks under the famous channel coach Stella Streeter. Why the famous channel coach Stella Streeter? But when I told them that I wanted to make a solo attempt and after the training এবং প্রশিক্ষণ পরে সিএন জানকী told the official of English Channel Association एवं ट्रेनिंग नहीं सारिला परे जेतेबेले जानकी स्विमिंग एसोसिएशन को तांकर एकाकी पहरिबा सोलो अटेम्प्ट मीन्स व्यक्तिगत उद्यम वा प्रयास दैट द अटेम्प्ट मेड बाय वन पर्सन जन द्वारा जोटा प्रयास करा जाय कोन कहबा हमें सोलो अटेम्प्ट so when CN Janki told them that means CN Janki told to the English Channel Association to make a solo attempt अर्थात एकाकी बा व्यक्तिगत पहरिबा पई जेतेबेले से चैनल स्विमिंग एसोसिएशन रो कर्मकर्ता मान को जणैले they said they did not have a special boat to accompany me से माने कोन कहिले their answer was that they had no special boat to keep a sharp eye on CN Janki तांको पाखरे स्पेशल बोट नहीं CN Janki को सांगरी जीवा पई तांको नजर रखिबा पई तांको पाखरे नाही this was in case I needed to be lifted out of the water this was in case I needed to be lifted out of the water so it was decided that I would be a part of relay team अर्थात से माने कहिले तांको सांगरे स्पेशल बोट नहीं तांको पाखरे जोटा कि जानकी को नजर रखि परिबो तो they said that they did not have a special boat to accompany me this was in case I needed to be lifted out of the water जदि दरकार पड़े जदि कोनोसी this was in case जदि किछि अघटन घटे ताले तांको जळरु उठेबा पई तांको स्पेशल बोट नाही तांको पछे पछे जीवा पई so it was decided that I would be a part of a relay team so the English Channel Swimming Association the official of English Channel Association decided that CN Janki would be part of a relay team एवं Channel Swimming Association रो कर्मकर्ता माने डिसाइड कले स्थिर कले जे CN Janki गोटे रिले टीम रे पहरिबे दलीय संतरण दल रे से भाग नेबे रिले टीम रे then let us understand the text better the question may be asked in examination from the paragraph 7 why was it decided that CN Janki would be part of a relay team काहे कि रिले टीम रो जने अंश हेबे बोली निष्पत्ति निया गला it may be asked in examination Janki wanted to have the solo attempt but the association told her that they did not have a special boat to accompany her it was in case if she needed to be lifted out of the water so it was decided that she would be a part of a relay team as you know in paragraph 7 Janki wanted to have the solo attempt Janki solo attempt करिबा भी चाहुतले but the association told her that they did not have a special boat to accompany her तांको नजर रखिबा पई तांको संगरे जीवा पई तांको पाखरे स्पेशल बोट नथिला एसोसिएशन पाखरे so it was in case if she needed lifted out of the water जदि दरकार पड़े ताले तांको जलरु आनिबा पई असुविधा हेई पारे so it was decided that she would be part of a relay team एवं सेति पई सेही असुविधारु तांको रिले टीम रे
अंशीदार हेबा पई बा भागीदार हेबा रिले टीम रे जोग देई पहरिबा पे निष्पत्ति निया गला सीएन जानकी देन paragraph number 8 I am going to read. Follow me. The channel swim can be done in two ways. One is the solo and the other the relay swim. 6 swimmers form a team and they each do a minimum of 2 hours of swimming. Now the other swimmers in the team, mostly Americans, were amazed to see that Janki could swim, and to honor her they named the relay team Janki's Maritime Express. Needless to say, every member of the team other than Janki was physically normal. So the channel swim can be done in two ways. और the channel रे पहराटा दुई प्रकार थिला, दुई प्रकार होउथला. जनकू चैनल रे पहरिबा पे अनुमति दुई प्रकार जने पहरी परिबो चैनल रे, इंग्लिश चैनल रे. एंड वन इज सोलो, दैट मीन्स एकाकी, निजे कहा साथी रे नहीं, एकाकी से पहरिबो. वन इज द सोलो स्विम एंड द अदर द रिले स्विम. रिले स्विम माने दैट मीन्स रिले स्विम एक दलगत संतरण, गोटे दल रे पहरिबा को हेबो, एकुटिया पहरिबा को हेबो गोटे अर्थ रे, आउ गोटे अर्थ रे गोटे दल रे, गोटे संतरण दल रे भाग नेबा को पड़िबो. एई प्रकार दुई प्रकार भाव रे हमर पहरिबा पे अनुमति दे जाउथला चैनल रे, इंग्लिश चैनल रे. 6 स्विमर्स फॉर्म ए टीम. आउ रिले स्विम रे बा रिले टीम रे 6 स्विमर, द रिले टीम कंसिस्ट ऑफ 6 स्विमर. अर्थात रिले टीम टा बा रिले स्विम टा 6 जन को नेकी गठित हेउथला. फॉर्म ए टीम, 6 स्विमर्स फॉर्म ए टीम एंड दे ईच डू मिनिमम ऑफ 2 आवर्स ऑफ स्विमिंग. एवं सेथिरे जेतिक जो प्रत्येक स्विमर, प्रत्येक संतरणकारी 2 घंटा पहरिबा को पड़ुतला. 2 घंटा प्रत्येक जणे जणे करी सेमान को 2 घंटा लेखे पहरिबा को पड़ुतला. हमरो रिले स्विम रे, रिले टीम रे. Now the other swimmers in the team, mostly Americans, were amazed to see that Janki could swim, and to honor her they named the relay team Janki's Maritime Express. So you are also be surprised. Now the other swimmer the team, जो टीम टा गठन हैला, जानकी जो टीम रे पार्टिसिपेट करिवे, सेई टीम रे मोस्टली अमेरिकन्स, अर्थात सेई टीम रे अधिक प्राय समस्त अधिकांश अमेरिकीय थिले, अमेरिकार स्विमर थिले, जोठी सीएन जानकी पार्टिसिपेट करिवे. जो संतरण दल रे, दलिया संतरण रे जो से पार्टिसिपेट करिवे, सेई टीम रो अधिकांश स्विमर अमेरिकन्स अर्थात अमेरिकीय थिले. were amazed to see that Janki could swim, एवं सही American swimmer were amazed to see that Janki could swim. एवं as you know, Janki was a handicapped person, disabled person, but when he swam in English Channel in a relay team, American swimmer were amazed to see that Janki could swim. As a handicapped person, as a disabled person, she and Janki could swim. एवं सो दल रे जो अमेरिकार संतरणकारी थिले, जानकी भलिया जने विकलांग महिला पहरी पारुथबार देखि से माने आश्चर्य होइथिले, चकित होइथिले. एंड टू ऑनर हर दे नेम द रिले टीम. एवं जानकींकर सम्मानार्थे टू ऑनर हर नेम द रिले टीम. तांकर जो 6 जणिया दल थिला, सेई टीम रो ना दे दिले जानकीस मेरीटाइम एक्सप्रेस. जानकीस मेरीटाइम एक्सप्रेस सेटा इन ऑनर टू सीएन जानकी दे नेम देयर टीम जानकीस मेरीटाइम एक्सप्रेस. नीडलेस टू से एवरी member of the team other than Janki was physically normal. As we know,
that Sien Janki was disabled person, handicapped person, but in that team, Janki's Maritime Express team, every member of the team other than Janki को छाड़ी दिले जेती की सेथिरे संतरणकारी थिले समस्ते फिजिकली नॉर्मल अर्थात शारीरिक भाबरे सुस्थ थिले फिजिकली फिट only Sien Janki was disabled physically केवल शारीरिक भाबरे भिन्नक्षम थिले Sien Janki किंतु आउ जेतिकी संतरणकारी थिले समस्ते फिजिकली नॉर्मल अर्थात शारीरिक भाबरे सुस्थ थिले से माने then let us understand the text better. What does Janki's Maritime Express mean? हमको क्वेश्चन भी आसी पारे जे Janki's Maritime Express माने कोन आमे तो पढिले भी क्वेश्चन रे केमिति लेखिबा how to write the answer of question what does Janki's Maritime Express means. It was decided by the English Channel Swimming Association that Janki would be a part of relay team. आमे आगुर भी पैराग्राफ देखिले जे स्विमिंग चैनल एसोसिएशन कर्मकर्ता माने स्थिर कले जे जानकी रिले टीम रो अंशीदार हेबे अर्थात रिले टीम रे भाग नेबे. द रिले टीम वाज consisted of 6 मेंबर एवं रिले टीम 6 जन को नेकरी गठित होइतला. 6 स्विमर almost all the members in her team were American एवं सेही टीम रे अधिकांश सदस्य अमेरिकीय थिले and they were physically fit. से माने शारीरिक भाव रे फिट थिले सुस्थ थिले but Janki was the only handicapped swimmer in that team. In the team केवल जानकी जने विकलांग महिला हिसाब रे सेही दल रे अंशीदार थिले बा भागीदार थिले. So in order to honor her they named the relay team Janki's Maritime Express. तेणु जानकी भलिया जने विकलांग महिला को जे कि पहरी पारुथिले तांकर सम्मान पाए तांकर दलर ना देले Janki's Maritime Express. Janki's Maritime Express dollar na dile Janki's Maritime Express. So this is the answer of the question what does Janki's Maritime Express mean. Then paragraph number 9 the unique attempt was made on 28th July 1992. अनन्य unique attempt mean unique माने अद्वितीय remarkable or unusual अनन्य एवं एटा आरंभ हैला एटा जानकी निजे कहू द यूनिक अटेम्प्ट वाज मेड ऑन 28 जुलाई 1992 1992 मसिया जुलाई 28 तारिख रे अनन्य प्रयास बा गोटे प्रचेष्टा आरंभ हैला होइतला आरंभ हितला 28 जुलाई 1992 रे माय फाइट said Janki in the course of swim was against nature. He said Janki my fight in the course of swim पहरिबा समय रे मोर संघर्ष my fight means मोर संघर्ष मोर लड़ाई. जानकी कहउचंदी जानकी कहिले जे my fight मोर संघर्ष in the course of swim पहरिबा समय रे was against the nature अर्थात प्रकृति विरुद्ध थिला पहरिबाटा प्रकृति विरुद्ध थिला. The channel waters are so cold. The channel waters are so cold that I needed much more energy than usual to keep my arms moving. अर्थात the channel waters are so cold. एते ठंडा थिला चैनल रो जलटा पानीटा से जानकी कहउचंदी जे एते ठंडा थिला that I needed much more energy than usual to keep my arms moving. मोर बाहु शरीर को संचालन करिबा पई जेतिकी शक्ति मते दरकार करिबा कथा ताठू अधिक शक्ति मते आवश्यक होतला. That means that was against of nature. अर्थात जलटा पूरा ठंडा थिला एते ठंडा थिला जे Sien Janki स्वाभाविक भाव रे जेतिकी शक्ति लगैबार कथा तांकर अंग संचालन करिबा पई ताठू अधिक शक्ति तांकू खटेइबा को पड़तला Sien Janki को. Then I had the problem of my legs.
Janki said that she had the problem of her legs moving to the left or to the right. Whichever way the waves were moving, अर्थात जो दिगरे whichever way the waves were moving एवं तरंग लहड़ा जो दिग को संचालित होउथला जो दिग को बहुथला सेई दिगरे जानकी को समस्या होउथला बाधा विघ्न उपजुथला प्रॉब्लम ऑफ हर लेग्स had the problem of her legs moving to the left to the right अतः से बाम डाहाण करबा कष्ट होउथला जो पटे लहड़ाटा मारुथला जो दिग को लहड़ा मारुथला सेई दिगरे सीएन जानकी कहबा को गले से तांकर लेग्स को मूवमेंट करि पारु नथिले लेफ्ट राइट करि नथिले बाम डाहाण करि पारु नथिले ए जुनो तरंगर गतिटा तरंगर संचालन टिके शक्त ही थाए तो जेहेतु सीएन जानकी जने विकलांग तेणु वेब जो पटे संचालित हेटा बहु थाए से पटे तांकु तांकर शरीर मूवमेंट हेबा पई संचालित करबा पई तांकर समस्या देखा दउते सीएन जानकी कर सो आई रियली नीडेड ए लॉट ऑफ एनर्जी तो इन दिस सिचुएशन शी सेड शी रियली नीडेड ए लॉट ऑफ एनर्जी एवं एई परिस्थिति रे से प्रकृति रे अधिका शक्ति दरकार करथिले बड़ सामर्थ्य दरकार करथिले एई परिस्थिति रे जेतु से जण विकलांग थिले द वाटर वाज भेरी सॉल्टी एंड अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द वाटर वाज भेरी सॉल्टी अर्थात पानीटा लुणिया थिला द वाटर वाज भेरी सॉल्टी एंड व्हेन इट एंटर माउथ आई फेल्ट सिक मीन start vomiting that means he said the water was very salty pani jalata luniya thila and when it enter my mouth that means when the water enter her mouth the mouth of CN Janki जेतबेले CN Janki को मुहरे पसी उथला पानीटा she felt sick तांको बांती भलिया लागुथला बांती भलिया लागुथला she felt sick जेतु जलटा लुणिया and then there were the seaweeds and there were the seaweeds and jellyfish this is the picture of seaweed and this is the picture of jellyfish seaweeds means आमे जदि ओडिया रे कहिबा एक प्रकार सामुद्रिक उद्भिद बा गुल्म जोटा कि समुद्र गर्भ रे बढ़ी थाए seaweeds jellyfish a jellyfish is a sea creature that has a clear soft body कोमल बॉडी क्लियर सॉफ्ट बॉडी एटा देखि परथो पिला माने एटा होची जेलीफिश एटा हला जेलीफिश another problem create seaweeds and jellyfish when CN Janki started swimming and then there were the seaweeds and jellyfish एवं सेठी से पानी रे बा जल रे seaweeds थिले सामुद्रिक गुल्म उद्भिद थिले और जेलीफिश थिले these fish kept sticking to my body and I felt very uncomfortable she said these fish kept sticking that means जाबुडी धरुथिले लागि जाउथिले सीएन जानकी को शरीर रे जेलीफिश लागि जाउथिले जाबुडी धरि दउथिले these fish kept sticking to my body and I felt very uncomfortable एवं जद्वारा सीएन जानकी असुखकर अनुभव करथिले तांकू आराम लागु नथिला पहरिबारे due to jellyfish kept sticking to her body सीएन जानकी को बॉडी को जाबुडी करी धरि पकोथिले लागि जाउथिले तेन पहरिला बेले सीएन जानकी को ए कष्ट होतला तांकू आराम लागु नथिला let us understand the text better what were the problem that Janki faced while swimming the channel in a relay team what were the problem समस्या कौन थिला what were the problem that CN Janki faced while swimming the channel in relay team गोटे दलगत संतरण रे पहरिला बेले CN Janki को समस्या सम्मुखीन हेबा को पड़िथला तो while swimming the channel in a relay team Janki had to face many problems
जानकी अनेक समस्यार सम्मुखीन होते while swimming the channel in a relay team जानकी had to face many problems. The first of all, the channel waters were so cold that she needed more energy to keep her arm moving. तो प्रथम कौन थिला प्रथम समस्या कौन थिला First of all, the channel water so cold, एते ठंडा थिला that she needed more energy to keep her arm moving. तांकर आर्म को संचालन करबा पई शरीर को संचालन करबा पई तांको बेसी शक्ति बा बल दरकार पडुथला आवश्यक पडुथला. And then second problem was the channel water was salty. एवं channel रो जल जोटा थिला सेटा थिला लुणिया. When it entered her mouth, she felt sick. जेतेबले से जानकी को से जलटा मुहरे भर्ती होतला पसी जाउतला से बाती भले तांको लागुतला बाती करि पगुथिल तार अर्थ. Besides, these weeds and jellyfish kept sticking to her body, which made her uncomfortable. Another problem was the seaweeds and jellyfish. These kept sticking to she and Janki's body. अर्थात she and Janki रो body रे लागि जाउतले jellyfish, seaweeds लागि जाउतले which made her uncomfortable. जाद्वारा तांको आराम लागुतला पहरिबारे तांको असुखकर लागुतला. So this is a flow chart. We can express the paragraph number 7, 8 and 9 through flow chart. आमे कौन सब पढ़िले आमे फ्लो चार्ट रे देखि परिबा हमर तीनटा पैराग्राफ रे. तो प्रथमे कोन जे गॉट ट्रेनिंग फॉर 3 वीक्स अंडर स्टेला स्ट्रीटर चैनल को थिले स्टेला स्ट्रीटर एवं तांकर अधीन रे चेन जानकी 3 सप्ताह धरि ट्रेनिंग नेले. देन 2 वेज ऑफ स्विमिंग हमर चैनल रे पहरिबा में 2 प्रकार संतरण व्यवस्था थिला. गोटे थिला सोलो स्विमिंग एंड अनदर इज रिले स्विम. 2 प्रकार गोटे सोलो स्विम आ गोटे हला रिले स्विम. जानकी जॉइन इन द रिले टीम नेम जानकीस मेरीटाइम एक्सप्रेस. और जानकीस मेरीटाइम एक्सप्रेस बोली जो दल ना दिया जाइथिला सेथिरे से योगदान करथिले. द अटेम्प्ट वाज मेड ऑन 28 जुलाई 1992 एवं एई प्रयास टी आरंभ होइतला 28 जुलाई 1992 रे. तांकर जोटा कि यूनिक अटेम्प्ट आमे कहूछु. तो दिस इज द फ्लो चार्ट वी कैन एक्सप्रेस थ्रू इट. तो से ट्रू और फॉल्स वर्तमान आमे ट्रू और फॉल्स देखिबा. आमे चैप्टर जहा जहा पढिले कोटा ठीक कोटा भूल आमे टिके आलोचना करबा पिला माने. तो फर्स्ट हला देखो दिनेश सुवर्णा वाज जानकीस कोच इन द इंग्लिश चैनल. से ट्रू और फॉल्स आमे मु सेंटेंस पढी जिबी. आई विल रीड द सेंटेंस एंड यू हैव टू से whether it is true or false. तम माने एटा ठीक अछि कि भूल अछि सत कि मिछ सेटा कहबो. ट्रू जोटा सत आमे जोटा पढिले जो सत लागुछि ताले ट्रू कहबा और जोटा भूल अछि ता फॉल्स कहबा. तो फर्स्ट सेंटेंस इज दिनेश सुवर्णा वाज जानकी's coach in the English channel. Who can say गोटे स्कूल नेबा गोवा हाई स्कूल. फॉल्स. दिनेश सुवर्णा वाज जानकी's coach in the English channel. Good. False. What is the correct answer? False टा कोटा दिनेश सुवर्णा टा भूल अछि. राइट टा कोटा हबो. Yes. Goga High School. You say Dinesh Suvarna was Janki's coach in the English channel. This is false. What is the right? Right टा कोन? Yes. Mr. Gopal. Mr. Gopal. No. Not Mr. Gopal. Yes. Other school. Stella Streeter was Janki's coach in the English channel. English channel रे Stella Streeter तांकर प्रशिक्षक थिले. Then second sentence, she is the only Indian in the relay team. से relay team रे केवल जणे मात्र भारतीय थिले. True or false? Yes. She is the only Indian false. in the relay team. Other school? Any other school? False. False. She is the only Indian in the relay team. False. And other students, it is true अछि. She is the only Indian in the relay team. केवल जणे भारतीय थिले से relay team रे. एटा ट्रू अछि. He went to England in 1987. से इंग्लैंड को 1987 रे जाइथिले. ट्रू टा 1992. 1992. Very good. She went to England in 1992. Very good. Number 4.
waters means part of a sea or a river. True or false? False. False. Any other students? False. Water means part of a sea or a river. This is true. This is true. Water means water in a plural form. Waters are a plural form. Means part of a sea or a river. 7 swimmers form a relay team. गोटे रिले टीम रे 7 जन स्विमर थांती. ठीक कि भूल? True or false? 7 swimmers form a relay team. गोटे रिले टीम रे 7 जन को नहीं गोटे रिले टीम गठित हुए. Yes? False. 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 What is the right answer? False. 6 swimmers. Right answer. 6 6 swimmers. swimmers. Very good. Well done. 6 swimmers form a relay team. So, multiple choice question देखिबा एबे पिला माने. What was the name of the famous channel coach? Mr. Gopal, Dinesh Suvarna, C. Stella Streeter, none of the above. What was the name of the famous channel coach? Channel coach रो ना कोन थिला? Stella Streeter. Option Stella C. Streeter. Option C. Very good. Stella Streeter. Then next question. How long was Janki trained under the channel coach Stella Streeter? Stella Streeter को अधीन रे सीएन जानकी केते समय धरि प्रशिक्षण नहीं थिले? 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks. Any other students? He said 3 weeks. Is it right answer? Yes. Yes. 3 weeks is the right answer. The right answer is 3 weeks. When did Janki make unique attempt? अद्वितीय प्रशिक्षण सीएन जानकी केबे आरंभ करथिले? Option A. Option A. Option A. ऑप्शन ए. Option A. 28 July 1992. 28 July 1992. 28 July 1992. Very good. 2. Good. Well done. Next question. What were the channel waters like? और the channel रो जलटा किपरि थिला? What were the channel's waters like? Too cold. Too Too cold. too hot, Too cold. Option A. Too cold. Option A. Too cold. Option A. Option A. Too cold. Option A, too cold. Yes, too cold is the right answer. Very good. Good. In the lesson, an unaccompanied swimming by a person is called dash swim. That means जने व्यक्ति द्वारा Option A. Option The relay A, swim. The relay swim. The relay swim. Option A. The relay swim. The relay The swim. relay Yes. swim. Option A. The relay swim. Any other school? Subhash Chandra High School Kolla? Yes. Option A. And The accompanied relay swimming. swim. The relay swim. No. देखिबा तुमर आंसर ठीक अछि भूल The अछि. solo swim. The The swim. solo swim. The Very solo good. The swim. solo swim. जणे पहला माने सेटा हम कोन कहबा? The solo swim. Next question. What was the name of the relay team? What was the name of the relay team? Relay team रो ना कोन थिला? Janki's Maritime Express. Option A. Option A. Option Option A. Janki's Maritime Option Express. A. Janki's. Option A. Option A Option is the A. right. Option A is the right answer. Very good. Well done, Savas. Janki's Maritime Express. Thank you. Very good. Thank you, all of you, for participating in my class. Thank you so much.